Hi, good morning, friends. This is Dr. Amit, uh, and welcome to a live session. I am not in Delhi, मैं अंडमान में हूँ, पोर्ट ब्लेयर में. So in case any of you want to meet me in Port Blair, you can. Anyway, this video is about labiaplasty. Labiaplasty is a surgical procedure जो कि female intimate areas में की जाती है, especially those ladies. So I think there are two types of age groups for labiaplasty. One जो से 30s 35 के बियॉन्ड चाइल्ड बर्थ डिलीवरीज हो चुकी हैं एंड उनके जो इनर लिप्स हैं मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटी एंड इवन चाइल्ड बर्थ की वजह से इनर लिप्स बाहर आ जाते हैं. सो आई एम श्योर यू नो व्हाट द इनर लिप्स आर. सो फीमेल इंटीमेट ऑर्गन्स में अगर आप देखें उस एरिया में देखें सो जो इनर लिप्स होते हैं जिनको लेबिया माइनोरा बोलते हैं दे कम आउट एंड दे कैन बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर कपल ऑफ रीजंस. क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिकॉज ऑफ लार्जर इनर लिप्स. वन, कॉन्स्टेंटली जो इनर गारमेंट्स होते हैं अंडर गारमेंट्स होते हैं दे आर वेट बिकॉज जो इनर लिप्स होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली सिक्रेटिंग फ्लूइड एंड उसकी वजह से इनर गारमेंट्स वेट रहते हैं विच मीन्स कि हाइजीन इश्यूज आ सकते हैं. सो यू द लेडी माइट सफर फ्रॉम रिपीटेड फंगल इन्फेक्शंस, उनको यूटीआई हो सकते हैं एंड इन जनरल उनको कपड़े पहनने में एम्बेरसमेंट हो सकती है बिकॉज दैट एरिया विल कॉन्स्टेंटली बी वेट. सेकेंडली, एस्थेटिकली इट कैन बी विजिबल विच मीन्स कि अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनने की आदत है आपको देन इट कैन बी विजिबल, द लेबिया सामने से दिख सकते हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज एस्थेटिकली देन इट इज स्पॉइलिंग योर लुक. So with today's kind of generation we want to look our best and especially अगर आप swim wear पहन रहे हैं bikini wear पहन रहे हैं then it can be a problem to कि अगर large labia अगर visible हो तो. Then we've had patients जिनमें who have been athletes. So athletes हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है अगर लेबिया बड़े हों. रीजन बीइंग व्हेन दे रन इट कैन कॉज ट्रॉमा बिकॉज लिप्स जब बाहर आते हैं then repeated rubbing of the undergarments can cause trauma to the inner lips and that can be a source of pain as well as infection as well as sometimes bleeding as well. So it depends. Now in younger girls also it is not कि सिर्फ older women में ही problems आ सकती हैं 30-35 post childbirth may, but even in younger girls, large labia can be a problem. One, aesthetic. See, today's generation or today's world is such that there's a lot of exposure to Instagram, there's a lot of exposure to social media, there's a lot of exposure to porn. And today's generation wants to experiment with sexual activity. And SMA, if they have large labia, then कुछ लोगों के लिए it can be a turn off. So they might feel embarrassed to have the large labia. In addition, again, like the factors जो मैंने भी बताया कि wet undergarments, repeated infection, trauma, aesthetically अच्छा नहीं लगता, visibility in tight clothes. So to sort of prevent yourself from having this problem, labiaplasty is a great procedure. Labiaplasty basically means correction of the labia. It's a great procedure जिसमें there are three types of labiaplasties we do. One, there are three techniques, so I won't go into the details. एक में wedge निकालते हैं V, एक में straight trim, and then there is another one जो hardly anybody does. Now labiaplasty itself is basically two types. First is Barbie doll. Barbie doll labiaplasty basically means कि हम labia को completely literally trim out कर देते हैं so that labia is not visible at all from the front. जब हम vagina के lips close होते हैं then labia is not visible. Generally preferred by American patients. इंडियन पेशेंट्स में बार्बी डॉल लुक नहीं देते हैं तो उसमें मिनिमल लेबियोप्लास्टी करते हैं इन विच देयर इज सम अमाउंट ऑफ लेबिया विच वी लीव बिहाइंड एंड दैट लुक्स मोर एस्थेटिक फॉर देम. सर्जिकल टाइम लोकल एनेस्थीसिया में इजीली हो सकता है. सर्जिकल टाइम इज अबाउट 35 to 40 minutes एंड पेशेंट को इमीडिएटली डिस्चार्ज कर देते हैं एंड अबाउट 10 to 12 days ऑफ स्वेलिंग रहती है. सेक्सुअल एक्टिविटीज एडवाइज कि 3 हफ्ते तक ना करें. 3 weeks डोंट डू एनी सेक्सुअल एक्टिविटी. फिजिकल एक्सर्शन वर्क, स्विमिंग, स्पोर्ट्स से अबाउट 10 days or so. Stitches जो लगते हैं they're all dissolvable. There's hardly any restriction in terms of that. Office work can start by the second or the third day. So friends, this is about the labiaplasty that I wanted to talk to you about. Okay, what age groups benefit from labiaplasty? Who are the women or younger girls who benefit from labiaplasty? How is it done? What are the post-operative precautions? So all this. So in case you have any questions, don't forget to follow this channel. Do like this video, do send a like and put your comments, put any of your questions or comments. And if you as a patient or you have friends who have this problem,
do ask them to get in touch with a well qualified plastic surgeon जो फीमेल इंटीमेट सर्जरी में एक्सपीरियंस रखते हैं एंड ट्रस्ट मी लेबियोप्लास्टी एंड डिजाइनर विजाइना सो दिस द अदर सर्जरी जो हम लोग करते हैं डिजाइनर विजाइना इन विच वी डू फैट इंजेक्शन इनटू द आउटर लिप्स एज वेल एज विजाइना टाइटनिंग दीज आर लाइफ चेंजिंग सर्जरीज जो जिन पेशेंट्स की सर्जरीज होती है ट्रस्ट मी दे इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर देम जो पेशेंट्स वापस आके वो कहते हैं कि लिटरली उनकी सेक्सुअल लाइफ हैज ट्रांसफॉर्म यहाँ से यहाँ एंड पर्सनली उनको बहुत अच्छा फील आता है अपनी फीमेल इंटीमेट ऑर्गन्स के बारे में सो दिस इज समथिंग विच हैज बिकम लॉट अ वेरी बिग ट्रेंड नाउ also we do what is called as G spot enhancement and O shots. O shots are orgasm shots जिसमें हम लोग ब्लड से पीआरपी को सेपरेट करके स्पेसिफिक एरियाज में दे आर इंजेक्टेड and they are said to enhance the blood supply of the vagina area and the ability of the lady to climax to get orgasms faster is enhanced so उनकी वो ability बहुत enhance हो जाती है and they feel a lot better by doing this treatment. So while I'm on Instagram as well, मैं इस टाइम पे YouTube और Instagram दोनों पे लाइव हूँ. Instagram पे एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को लाइव आने की मेरे साथ प्लास्टिक सर्जन अमित गुप्ता एंड एनी टाइम यू वांट टू कम लाइव join me on Instagram as well. So you can join in on Plastic Surgeon Amit Gupta on my Instagram, and you can ask requests to come live so that you can ask your questions live with me right there and then, and it becomes almost इस तरह हो जाता है कि एक consult process ही carry out हो जाता है. Great, great. Thank you so much. So YouTube पे मेरे साथ Mr. Sagar है. Good morning is wishing me good morning. So good morning to you and good morning to um, all of my colleagues, all of my friends on Instagram as well as YouTube जो मुझे इस टाइम पे सुन रहे हैं. I'm sure this video would have given you some information. So don't forget to like this video and post your comments and post your questions. It will be awesome to answer you. So we've got हरीश जी आप क्या पूछना चाहते हैं लाइव आना चाहते हैं आप क्या जानना चाहते हैं वो बताएं मुझे सो अगर आपके क्वेश्चन मुझे सो अगर आपके क्वेश्चन आप लिख दीजिए पर कमेंट्स में अगर आप चाहते हैं कि लाइव आना चाहते हैं तो फर्स्ट यू मस्ट टेल कि आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे तभी मैं आपको लाइव लूँगा ग्रेट सो फ्रेंड्स आई विल कैच यू अगेन इन लिटिल वाइल इवनिंग की तरफ विल कम लाइव विद अनदर वीडियो समथिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन एंड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे विल कीप आंसरिंग एट दैट टाइम